So yesterday we have covered EMR. Today we are going to understand what is Redshift. Okay. Again, Redshift is a database, but it is quite different from traditional databases. Okay. So Redshift is a data warehouse. What is data warehouse? It's a special type of database. Okay, which is used to process or analyze the huge amount of data. We are talking about terabytes to petabyte amount of data. Okay. In industry, Redshift is one of the most popular warehouse cloud solution. Okay, so Redshift is a fast, powerful, and fully managed petabyte data scale data warehouse service in the cloud. Okay, now what is the difference between database and warehouse? So database is generally used for read and write, that is OLTP, and warehouse is basically OLAP, that is analyzing the data. Okay, we have to analyze the sales report of a company for last 50 years, sales climate change in a country last 10 years, 20 years, 30 years. We have to do analysis. We have to analyze the stock market price. There are a few example of that. The customer can start with a small of just $0.25 per hour with no commitment or upfront cost, and scale to petabyte or more for $1,000 per terabyte per year, and less than the of the other data warehouse solution available in the market. So Amazon claims that the Redshift is quite cheaper as compared to any other data warehouse solution in the market. Data warehousing warehousing data warehouse databases use different type of architecture, both from the database perspective as well as infra perspective. So how they are different, I'm going to explain you in some time. So OLAP, online analytical analysis processing, example revenue of a country company, country wise COVID vaccine done on a daily basis, state wise, country wise, sales price of a stock over the last 10 years, climate change in the country, state, city over the last 10, 20, 50 years. We have to analyze this thing. Number of flights landed in Mumbai airport in the month of December 2024, 2023, like that. Number of flight departure from India in the t- time of 2020 to 2020, year wise, state wise, and so on. Okay, so this is generally the scenario. Now, what is basics of Redshift? What is basic of Redshift? Redshift configuration. Okay, how Redshift works. So Redshift has two configuration. One is single node, other is multi-node. Single node, basically there will be only single machine. Okay, and multi-node, we are going to learn about multi-node. So multi-node is equivalent to what we have learned yesterday, where there will be one main node or master node, or you can say leader node, and other will be compute node. It is a master slave architecture or lead on subordinate architecture, where there will be one lead node and other node will be working for it. Okay, so leader node manage client connection and service request. It is used to deal with the customers. Okay, client means human. So whatever the command we are giving, whatever the task we are giving, we are going to allocate it to the master node or the leader node, and it, the leader node has a responsibility to complete that task. Okay, whatever the task you are assigning to it. The compute node stores the data and perform query and computation. Up to 128 nodes you can attach to Redshift. Redshift has a massive parallel processing (MPP). Okay, what do you mean by MPP? So, as we had just understand that there will be multiple compute node. So, if you have 5 compute node, you can assign 5 parallel processing task. Each task can perform individually. That is a massive parallel processing. Amazon Redshift automatically distributes the data and query load across all the nodes.
Redshift make it easy to add node to your data warehouse and enable you to maintain fast query performance as your data warehouse grows. Next is how Redshift stores the data. Coming to that, let me explain you what is row oriented versus column oriented. Okay, अभी तक हमने देखा कि Redshift एक data warehouse है. Okay, वो मैसिव प्रोसेसिंग करता है. नेक्स्ट इज हाउ इट स्टोर्स द डेटा इज इम्पॉर्टेंट. हाउ रेडशिफ्ट स्टोर्स द डेटा इंटरनली. हमने जो भी डेटा रेडशिफ्ट को दे रहे हैं वो इंटरनली कैसे स्टोर करता है. ओके, इन जनरल सिनारियो कोई भी आप डेटाबेस में कुछ भी डेटा स्टोर करते हो तो लाइन बाय लाइन स्टोर करता है. दैट इज रो ओरिएंटेड. इंटरनली वो पूरी लाइन एक बार स्टोर करेगा, दूसरी लाइन स्टोर करेगा, तीसरी लाइन स्टोर करेगा एंड सो ऑन. ओके, इन दिस केस देयर इज अ लिमिटेशन कि अगर आपको कुछ डेटा को प्रोसेस करना है, लेट्स से अगर मुझे सेल्स रिपोर्ट निकालनी है, ठीक है. अब जब आप जनरली एनालाइज करते हो व्हाट इज ऑब्जर्व, आप रो वाइज नहीं करते, आप कॉलम वाइज कुछ एनालाइज करते हो. अगर आप देखोगे कि अगर हमको सेल्स रिपोर्ट निकालनी है कनाडा की, सीए, ओके, सो मुझे सिर्फ सेल्स रिपोर्ट की फाइल चाहिए, मुझे बाकी सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं चाहिए, राइट. अगर मैं लाइन बाय लाइन स्टोर करता हूँ डेटा तो मुझे सारी सेल्स रिपोर्ट निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा. ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे सेल्स रिपोर्ट, अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ कॉलम वाइज में, रो वाइज की जगह कॉलम वाइज में, तो पहले क्या होता था कि फर्स्ट एंड सेकंड रिकॉर्ड एक फाइल में रखा, 3 4 5 एक फाइल में रखा, ऐसे रखते थे. नाउडेज हम कॉलम ओरिएंटेड रखते हैं. रेडशिफ्ट में क्या करा, हमने कॉलम से स्प्लिट किया. तो जो भी डेटा आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में स्टोर होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम. ओके, तो सेल्स की वैल्यू एक फाइल्स में स्टोर होती है, एज की फाइल इंफॉर्मेशन एक फाइल में स्टोर होती है एंड सो ऑन. उससे क्या होता है, आपका कंप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, और बिकॉज वो नंबर है तो कंप्रेशन एज वेल एज स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी रहती है, प्लस प्रोसेसिंग फास्ट होती है. सो एडवांटेज, एडवांस कंप्रेशन. Columnar data store can be compressed much more than a row-based data store because similar data is stored sequentially on the disk. कॉलम की इंफॉर्मेशन अगर आप स्टोर करते हो एक फाइल में तो वो ज़्यादा कंप्रेस और ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहती है rather than रो. Next, Amazon Redshift employs multiple compression techniques and can often achieve significant compression relative to traditional data warehouse solutions or relational database. Compression optimization काफ़ी अच्छा रहता है. In addition, Redshift doesn't require indexing and materialization view, so less space than traditional database. Traditional database में इंडेक्स और मटेरियलाइजेशन करना पड़ता है, Redshift में उसकी ज़रूरत नहीं है. Then, when loading the data into an empty table, Redshift automatically samples your data and select the most appropriate compression techniques. Amazon Redshift बेस्ट कंप्रेशन टेक्निक्स आपके डेटा के हिसाब से सिलेक्ट करके कंप्रेस करता है. नाउ दिस इज अ एग्जांपल ऑफ रो. सो इफ यू आर स्टोरिंग द डेटा इन रो फॉर्मेट, सो ऐसा स्टोर होता है इंडिया चॉकलेट 1000. अगर डेटा आपका ऐसा है, अगर आपका टेबल ऐसा है कंट्री प्रोडक्ट सेल, तो रो ओरिएंटेशन में हार्ड डिस्क के अंदर ऐसा स्टोर होता है इंडिया चॉकलेट 1000 रो, इंडिया आइसक्रीम 2000 एंड सो ऑन. बट आप कॉलम में स्टोर करते हो तो आप कॉलम की सारी वैल्यूज टुगेदर स्टोर होगी. इससे फास्ट प्रोसेसिंग होती है और कंप्रेशन भी फास्ट होता है. सो दैट इज अ टेक्निक विच रेडशिफ्ट यूज टू स्टोर द डेटा. नाउ similar to any other database, Redshift again has a backup where you can enable the backup up to retention period of 35 days. Redshift always attempt to maintain at least 3 copy of your data, original data, replication in different nodes and a backup in S3. ठीक है, Redshift हमेशा 3 कॉपी ऑफ योर डेटा मेंटेन करने की कोशिश करता है. Redshift can also asynchronously replicate your snapshot to S3 in another region for disaster recovery.
अगर आप चाहो तो डिजास्टर रिकवरी के लिए आप अपना एक स्नैपशॉट बना के डिफरेंट रीजन में डाल सकते हो। ओके, प्राइसिंग विद रेडशिफ्ट। रेडशिफ्ट में आप जितने नोड यूज करोगे उतना प्राइस लगेगा, मास्टर नोड का प्राइस नहीं लगता। जितने भी आपने वर्किंग नोड है उसका ही प्राइस लगता है। सो कंप्यूट नोड, द कंप्यूट नोड आर टोटल नंबर ऑफ आवर्स यू रन अक्रॉस ऑल योर कंप्यूट नोड फॉर द बिलिंग। So if you are running 1 unit per node per hour, so a 3 node data warehouse running persistently for entire month, अगर आपको 1 यूनिट लग रहा है पर नोड पर मंथ और 3 नोड का क्लस्टर यूज कर रहे हो, so you will get 3 multiply 24 multiply 30 days. That is a charging instance hour. Okay, only compute node are charged, not master node. Master node is not charged, only compute node is getting charged. Okay, apart from that, what are the security? Encryption in transition using SSL, encryption at rest using 256 encryption method, similar what we have learned in S3. Okay, by default Redshift take care of key management service, but even you can use your own key to encrypt your data as well. Okay, now Redshift is always running in a single availability zone. Okay, so currently Redshift only run in one availability zone, can restore snapshot to new availability zone in the event of outage. Redshift हमेशा सिंगल availability zone में ही रन होता है, मल्टीपल availability zone में रन नहीं होता, क्योंकि सारे जो नोड्स रहेंगे, जितने भी सिस्टम रहेंगे उसको सब आसपास चाहिए. Okay, so what we have learned till now, EMR is an industry leading cloud computing platform for processing vast amount of data using open source tool. A cluster is collection of EC2 machine. Each instance in the cluster is called node. Master node, node that manage the cluster. Master node tracks the status of the task and monitor the health of the cluster. Core node, a node with software component that run task and store the data. Task node is basically software component which only runs the data process basically. Redshift, Redshift used to business intelligence. Backups, by default 1 day retention period is enabled on Redshift. You can go up to 35 days. Redshift always attempt to maintain 3 copies of your data. You can asynchronously create backups in different availability zones for disaster recovery in S3 bucket. This is all about Redshift. This is the fundamental of Redshift. Redshift doesn't come in free tier. I can show you how you can create the Redshift cluster similar to your EC2 cluster, but it is not in free tier. So this is again a data warehouse solution. So Redshift is basically used by industry as a data warehouse solution, and you will find that it very commonly every company is using this Redshift nowadays. So you can go and try Redshift. Okay. So there is a charge associated to Redshift also. So I'm not creating any database here. You can just have to give the name custom, give name, dev password setting just like your RDS machine. If you want to give a role, you can give IAM role, then work group name, capacity, how much capacity you have to define, and security groups, and that's it. Okay, this is all about Redshift.